Hello everyone. How are you all? How was the exam? Yeah, I'm fine. Thanks for asking. I'm fine. Thanks for asking. How was the exam? Anybody attempted the exam or pretest present here? We'll start with the doubt first. Who are having doubts? Start. सर वो टेस्ट का सर वो आंसर सॉल्व करवा दो ना एक बार. अच्छा, कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट. अच्छा ठीक है, रखो, थोड़ी देर में देखते हैं क्वेश्चन को. ठीक है, और देख लेते हैं टॉपिक रिलेटेड पे डाउट है या नहीं. Any doubts? Let's start with the doubts first. Yeah, what in time complexity? सर आपको टेक्स्ट में भेजा मेरे डाउट्स. क्या क्या है दिखाना. मतलब क्या प्रॉब्लम है इसमें, बताओ. सर ट्राई कर रहा था मगर जमा नहीं है सब. मतलब प्रैक्टिस कर रहा था मगर बराबर हुआ नहीं. कुछ नहीं, बस नंबर ऑफ ऑपरेशंस देखना है कितना हो रहा है. ये लूप भूल जाओ, लूप कुछ भी हो, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितना हो रहा है, इस बात पे फोकस डालो. ओके, लेट्स दो लाओ कोई एक ये गिव सम ऑफ द सीसी क्वेश्चंस व्हाट यू कैन नॉट सॉल्व. लेट्स ट्राई सॉल्विंग देम. Yesterday's CC question, okay, not for today's assignment. Okay, you have to do the assignment yourself first, then I will be doing. Okay. Okay, what question you cannot solve? सर वो डे बिफोर यस्टरडे वाले में भी डाउट था. बोलो क्या हुआ. एक मिनट वो कोई ओपन करा था सर क्वेश्चन. सर चैट में शेयर किया. ओके फाइन, चलो सही है, देखते हैं. बस चलो मुझे ये फुल स्टार्ट कर लेने दो अपना ओपन बोर्ड. बस 14 पार्टिसिपेंट्स. आज इन्हीं को डाउट है. सर स्क्रीन शेयर करो क्या क्वेश्चन पेपर में उसके उस दिन वाले उसी सीसी की. कोई सीसी भेज दिया सौरभ ने, उसके लिए और जरूरत नहीं है, मिल जाएगा यहीं से. ठीक है, मैं भी क्योंकि स्क्रीन शेयर सॉल्व डे बिफोर करूंगा यस्टरडे का था मेरा. वही उसी का सीसी है, बिकॉज यस्टरडे फ्राइडे तो मैं प्रेजेंट नहीं था ना. ओके फाइन, ग्रेट. शेयर माय स्क्रीन. Screen is visible to everyone.
Yes, sir. Screen is visible to everyone. Okay, fine. Let's come. Let's do this one first. What is it? I equal to 1. N is an input, right? N is an input from console. I equal to 1, j equal to 1. Now what will happen? While I is less than equal to n. Next, while j is less than equal to n. J equal to j into 2. And after that, I equal to I into 2. Okay. Fine. Okay, great. So, okay, first tell me, what about the inner loop? How many times it will run? The log n. Okay. All of you are sure that, yeah, this will run log n times? Yes, sir. It is clear now that this inner loop will run log n times. सर कब Is का it- क्वेश्चन है? Week 6 day 4 CC. सर बता सकते हैं कैसे लॉग इन होगा एक बार? वही सिंपल जैसे हम लोग ने किया था. क्या हो रहा है? लेट्स n को 10 लेते हैं, ठीक है? तो बताओ, j तो इनिशियली 1 है ना? फर्स्ट कम हियर. 1 is less than equal to 10, true? That means j equal to, now j was initially 1, increment the value of j by multiplying it with 2. Now it will be 2. Next comparison, 2 is less than equal to 10, true. Again, value of j will be multiplied by 2. It is becoming 4. Next, 4 is less than equal to 10, true. Its value will change to 8. Next, 8 is less than equal to 10, true. What will happen? Its value will be changing to 16. Now the loop terminates here. So for how many values the jth loop is running? 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3. Is it correct? Am I telling correct that for j equal to 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, for all these values my inner while loop is running, correct? My inner while loop will be executed. True or false? True. All of you, is it clear that for the inner jth loop, inner while loop will run for value of j to the power 0, 1, 2 and 3 for all these 4 values? I think someone's सर कल background के noise सीसी is का है coming. क्या? हाँ, कल के सीसी का है. डे बिफोर यस्टरडे वाले. ओके. Okay, yeah. Okay, now if I want to calculate the time, how many operations I require to execute this loop, what I will say, how many times the loop has run, how many times? 4 Till times. the time 2 to the power x is less than equal to n. Can I say this? कह सकते हैं? How many times the inner jth loop will run till the time 2 to the power x is less than equal to n? True or false? True. So what can I say? The number of operations for the inner while loop is log n. Okay, you need to know some basic mathematics to carry this on. How? If I apply log both sides, the value of x comes out to be log n. That's all. X is the number of times my while loop will be running. So how many times the jth loop is running? Log n times. Sir, here we multiply j into 2. Yeah. What if we use j plus 1? Then it will run n times, isn't it? The inner jth Yes, sir. loop then will run n times. That's all. Then the complexity will Be n log n, then n log n. The inner jth loop, how much operations are being required to execute the second- inner jth loop? सर सेकंड वाला जो एग्जांपल है वो हाँ. उसी पे है, तो आप पहले इसको कंप्लीट कर दो. Yes.
how many times is it required to run the inner jth loop? Log n times. Correct. Now tell me how many times the jth loop will run? Total number of times. Each time the ith loop will be running, a jth loop will be running for it. Correct or wrong? Yes, sir. For each value of I, the jth loop will run. So how many times the ith loop is running? Can I say again log n times? See here. Yes. How many times the ith loop is running? Log n times. Log n times. True or false? Why? Value of I is getting multiplied by 2. Nothing else. So what's my complexity? How many So is times it- the jth loop is running? How many times? For each I, for each value of I, jth loop will be running log n times. Now, okay, yeah, let's see here. So will it be log n square? Yes, it will be log n square. Now see. सर वो बी को एन इसमें अप्लाई नहीं होता है क्या? होता है, आता हूं, रुको. I equal to 1. For I equal to 1, jth loop will run. Jth Log n loop will times. run how many times? Log n Log n times. Next, I equal to 2, right? I is multiplied by 2 for each iteration. What will happen? Jth loop will be running log n times. I equal to 4. Jth loop will be running log n times. I equal to 8. Jth loop will be running log n times, correct? Now, I equal to 16. No jth loop will be running. Why? Because Loop terminate होगा. this condition is becoming false. So how many times the ith loop is running? See here, 1, 2, 4, 8. Can I say again it is running log n times? Can I or can't I? Which one? Log in. Right, ith loop 2 is running log n times. So what's happening? What's the time complexity? What can I say? How many times the jth loop is running? Log n into log n. So the time complexity is big O of log n square, whole square. Okay. Got it, all of you? How to calculate the time complexity here? Yes, sir. Only 2 and rest. सर अगर इसकी जगह फॉर लूप है तो लूप को कंसीडर नहीं करना है. लूप कैसा नहीं भी देखना चले, है, number of जस्ट देखो operation कि ही नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितना है. लूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर हो वाइल हो व्हाटएवर. देखो कि क्या हो रहा है. सर हमने number वो of लॉग operations एन कितना हो रहा है. उधर सर लॉग एन स्क्वायर कैसे हुआ वो नहीं समझ. देखो आई लूप कितनी बार चलेगा? आयत आउटर आयत लूप लॉग एन टाइम्स. सही है. ओके. और ईच आई, फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई, ईच आयत लूप के लिए जे लूप रन कर रहा है लॉग एन टाइम्स. तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस में कितना कर रहा हूँ? ओके सर, लॉग एन स्क्वायर. ठीक है, लॉग एन स्क्वायर. ठीक है, ऑल डन. इज दिस प्रॉब्लम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. ओनली 2, 3 रेस्ट. Yes, sir. Play. रेस्ट. So, बोलो. can anyone show yesterday's question paper? It's with me. I am taking all of them. Wait, one by one. What about the rest of people? 14 are there, right? Not getting any response from apart from 5, 6. You have to practice like this. Okay. Practice is very much necessary. Logical interpretation, everything you have to do. सर अगर हम आंसर में ओनली बी को एन लिख देंगे तो वो रॉन्ग होगा. हाँ, बिल्कुल रॉन्ग होगा. लॉग एन और एन में कितना फर्क होता है? सर लॉग एन कब आता है? जब हम लोग लूप या वाइल में लेते हैं तब. ऐसा कुछ नहीं. जब n ऑपरेशंस होगा तो log n आएगा. सॉरी, n ऑपरेशंस होगा तो big O of n आएगा. दैट्स ऑल. हमेशा देखो ऑपरेशंस कितना हो रहा है, उसके बेसिस पे कॉम्प्लेक्सिटी आता है. 2 ना टू द कि- पावर के बोलो. 2 टू द पावर के सीरीज में अगर ऑपरेशंस हो रहे हैं तो लॉग आएगा. नहीं, 2 to the ऐसे अगर जब देख रहे हो समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग कि या 2 नंबर ऑफ ऑपरेशंस. यहाँ पे क्या हो रहा है? कितना ऑपरेशंस होगा jth लूप में?
2 to the और power operation। x equal to n, ऐसा कुछ आ रहा है ना। हाँ by 2 क्या हो रहा है, कह सकते हो कि x is the number of times my while loop is running, something like that. Okay, so how will I find the value of x using logarithms? So that's why यहाँ पे log n आ रहा है। नहीं, सर अभी इसमें वो अगर J आंसर plus- क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा बिगो 1 बिगो n का, log n का ही ऑप्शन रहेगा उसमें। किसमें सब आ सकता है, बिगो 1 ये log n। यहाँ दिया है ना बिगो ऑफ लॉग एन स्क्वायर, हम्म, उसका कन्वर्शन ही तो Okay. करके दिया है ना। ये मेरे को डाउट आता था कि बिगो n और log n में फर्क क्या है। बहुत फर्क है। लॉग एन जस्ट एक लूप का ऑपरेशन कितना है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाला है। तो उसके उसको हम बाद लोग में- किस तरह से मतलब उसको डिफाइन करेंगे, मतलब कौन सा होता है वो? एक मिनट सुनो, जे लूप के लिए ऑपरेशंस रन किए मैंने, तो उससे मैंने क्या निकाला कि जो मेरा जे लूप है वो लॉग एन टाइम्स चल रहा है, ठीक है। फिर मैंने उसको आई लूप के लिए निकाला, आई लूप Okay. कितने बार चल रहा है, लॉग एन Log n। टाइम्स, और इन दोनों को जब मैंने मर्ज किया और फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी निकाला, दैट मीन्स वो मेरा बिगो ऑफ के टर्म log में n आएगा। स्क्वायर। ये मतलब कि देखो, हम इधर मतलब कि देखो। हमको सर अगर वो लूप से बाहर रहेगा तो वो log n नहीं रहेगा क्या? हाँ, अगर इनर लूप बाहर रहता तो वो log n ही रहता, log n प्लस log n k log n 2 log n होता तो वो इफेक्टिवली log n है। देखो इधर log n का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, 1 पे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, राइट। एग्जैक्ट मेरे को भी ग्राफ बिग ऑफ n का ग्राफ ऐसे आता है, सीधा लीनियर लीनियर आता है। log n का, हाँ log n का शायद कुछ उससे इस थोड़ा तरीके से हाँ, ऐसे कुछ ग्राफ जाता है log n का। हम्म, तो देखो n को मैं जैसे जैसे बढ़ाते जा रहा हूँ, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कांस्टेंट होते हैं। बिगो ऑफ n के तुलना में क्या होगा, बिगो ऑफ n में ऑपरेशंस बढ़ते जाएगा, रादर log n में क्या हो रहा है, बढ़ ऑलमोस्ट होते कांस्टेंट जाएगा। रह रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है। सॉरी यार, ये e टू द पावर x का ग्राफ हो गया, ये गलत ग्राफ है, सॉरी। लेट मी ड्रॉ इट। सर वो अगर रेंज में रहेंगे तीन, एक रेंज में एक, तो वो log n रहेगा या फिर बिगो n रहेगा? नहीं, log n रहेगा, वो कोई बात ही नहीं है, रेंज नहीं। यहाँ पे जब आ रहा है कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस log n है, तो n कहाँ से आ रहा है। हाँ, ये कह सकते हो कि बिग O ऑफ n और log n में जो फर्क है वो ज्यादा नहीं है अगर रेंज कम है तो, बट रेंज बढ़ रहा है तो सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, अगर log n की वैल्यू 1 होती है तो वैल्यू 0 होती है ना, y की वैल्यू 0 होती है यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस, ऐसा लॉगरिथम n का ग्राफ जाता है, ठीक है। तो देखो एक के तुलना में बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो log n अगर मेरा नंबर ऑफ ऑपरेशंस है तो दोनों में फर्क कितना है, ठीक है। बिग O ऑफ n है ये log n है, दोनों में वैल्यू कितना है। अब जैसे जैसे मैं n की वैल्यू को इंक्रीज करता जाऊंगा, log n क्या है, उतने कम ऑपरेशंस में मेरा टास्क कर रहा है, और बिग O ऑफ n उतने ही मतलब ज्यादा सर ऑपरेशंस में मेरा काम log कर रहा है। n वो log n लूप्स के अंदर वर्क करता है क्या ज्यादा? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सेकंड कुछ वाला नहीं। सर, सेकंड वाला जो है, मतलब ये log n जो है ये मोर एफिशिएंट है बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से, देख रहे हो। कोई भी एल्गोरिथम अगर मैं डिजाइन कर सकता हूँ, कोई भी कोड अगर मैं लिख सकता हूँ जिसमें log n नंबर ऑफ ऑपरेशंस है, वो एनी डे बेटर है इन Big O of ऑपरेशंस n से, से। ओके। वो एनी डे बेटर है, ये क्या है, कम टाइम में ज्यादा काम कर सकता है, इसको उतना ही काम करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए। सर बिगो एन क्या है वो एग्जैक्टली वही बिग O ऑफ n ही है, ठीक है। तो ये बिगो ऑफ लॉग एन होगा ना फिर। हाँ, एक log n नंबर ऑफ ऑपरेशंस ही है ना, तब तो मैं log n और ये n है, ऐसा कंपैरिजन होता है। बिगो ऑफ लॉग एन इज कंपेयर्ड विद Big बिगो O ऑफ of n। एन। ठीक है, और और log n क्वेश्चन। ज्यादा सही रहता है। बिल्कुल, log n ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। और दिखाओ कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ इसमें एक तुमसे। सेकंड वाला जो है व्हाइल लूप में सेम जे लूप का जो ऑपरेशन हो रहा है वो उसमें जो ऑपरेशन दिया है जे इक्वल्स टू जे प्लस 1 है, हाँ, तो क्या होगा इसमें बताओ। तो उसमें जे लूप n टाइम्स चलेगा। हाँ, तो और बाहर का लूप कितना कितना टाइम्स चलेगा। बाहर का लूप तो सर लॉग एन टाइम ही हो रहा है। सर Log n ये time- भी ये चलो वो भी देख लेते हैं। ये भी log n आंसर है ना सर इसका? इसका देखो क्या हो रहा है, while क्या है,
स्टार्टिंग क्या किया, i इक्वल टू while- 1 j इक्वल टू 1, ऐसा ना, while Hmm. i N is is less than equals to equal to input. n इक्वल टू इनपुट, इनपुट से आ रहा है, Hmm. ठीक है। क्या होगा, while i is less than equal to n, while क्या हो रहा है, while j j is less than equal to n, ऐसा ही ना, हाँ क्या हो j रहा है equals फिर? to j plus 1. ओके फाइन, चलो ये क्वेश्चन मजेदार है, लगता तो वही है, j इक्वल टू j j plus प्लस 1. 1, हाँ I फिर लूप के एंड में i इक्वल टू i I इंटू into 2, 1. ओके I फाइन, into ठीक 2. है, I into 2. ठीक है, ऐसा ही है ना, Yes. ठीक है फाइन। इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालना है, बताओ किसने किया है, सॉल्व किसने किया है? पेपर पे उसका ऑपरेशंस कैलकुलेट कर लिए थे, बट वो समझ में नहीं आया आखिरी में। बताओ ये किसने सॉल्व किया है, कैन एनीबॉडी से? हाँ VS कोड पे ले लीजिए। पर ये तो कम्प्लेक्सिटी है भाई, इसमें इसको VS कोड में लेके क्या करोगे, एक्सप्लेन तो मुझे यहाँ करना पड़ेगा। एक्सप्लेन नहीं सर। सर इसका भी log n स्क्वायर है क्या? नहीं, log n स्क्वायर नहीं है। So and login. ओके लेट मी सी, Log लेट मी n. सी, आई डोंट थिंक सो n log n होने वाला है इधर पे। n-1 log n लग रहा है सर। हाँ चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। हाँ Okay, let's see. Observe here. While I is less than equal to n, first value of I is less than n, right? Less than equal to n. This condition is true. It N will come consider to कर execute लेते the inner loop, right? J is less than equal to n. J equal to j plus 1. True or false? ट्रू, फर्स्ट कंडीशन के लिए ट्रू First, होगा। j equal to 1 first. What will happen? J is less than equal to n. This is true. J will be increased by 1. सर n तो डिफाइन कर दीजिए। Yeah, n, let n be 10 first. So for how many times the jth loop will be running? Can anybody tell me? in time. N times. 10 times it will run, right? N times. Yes. While loop has run n times and value of j has gone to 10. Am I correct 10. or wrong? Yes. Correct or wrong? One to start with. After executing this while loop, value of j will n be minus 1. y n minus 1. It will be 10 only, right? Means Sir, value of sir, value of j calculate will be कीजिए ना, equal sir. to n. One j फर्स्ट कंसीडर किया 1 is less than 10, एक बार लूप चलेगा। okay, yeah, sorry. वैल्यू It will be -1 आएगा, 9 आएगा वो। value of j will be reaching 11, right? At 11, 11, at हाँ. j equal to 11, this loop will terminate. Yes, yes. Fine. Now what will Yes. happen? I equal to I into 2. Value of I changes to 2. Correct? Okay, let me wipe out first everything. सर एक बार पूरा कैलकुलेशन ही कर लो। हाँ ठीक है, चलो करते हैं। See here, all of us. जे लूप का ही कैलकुलेशन कर लो पूरा। Okay, yeah, करते हैं। चलो। फर्स्ट j is equals to 1 से। Starting. I equal to 1, j equal to 1. Okay. First, see this while loop will start. I is less than equal to n, true, right? This inner, the flow will come to the inner loop while j is less than equal to n, right? Now what will happen? This condition is true. The value of j is 1. J will be incremented by 1. J equal to j plus 1. Value will change to 2. Next, it will go back here. J is less than equal to n. True, right? Because value of n we have assumed to be 10 first. What will happen? Value changes to 3. Similarly, it will keep on changing till the value becomes 11, right? At j equal to 11, what will happen? This loop becomes false. Condition becomes false. And now this line will be executed. I equal to I into 2. What will happen? Value of I becomes 2. Okay. Flow goes here back again. Now tell me, okay, this is again true, right? 2 is less than equal to 9. 2 is less than equal to 10. Value of n is 10 and value of I is 2. Now tell me, will this be executed again? Yes. Why? Value of j is 11 already and n is 10. How can this loop be executed again? Right? J is less than equal to 9 n. This condition should be true for running this loop. Am I correct or wrong? J less than equal to n should be true for running this loop. But after the first while loop has been executed, value of j has turned to 11. How can this loop run again? Can anybody tell me? Am I correct, wrong, or right? एक ही बार रन होगा। Am I telling correct or wrong? Who will answer? After, for I equal to 1, right? When I was 1, what had happened? The jth loop,
the inner jth loop has converted value of j to 11. Correct? Now once value of I is changing to 2, will this inner jth loop run again? No. Why? Value of j is 11 and 11 is strictly greater than 10. How can the condition is false? How can this loop run again? So this entire block will be skipped. Now it will come here. I equal to I into 2. Value of I changes to 4. Again, it will come. Since 4 is less than equal to 10, this condition is true. What's happening? This inner loop will be checked. The condition will be checked. The condition is false. It will come back here again. I into 2. Value becomes 8. फिर से चेक करेगा. Again it will check the condition, come to this inner while loop, condition here, j is less than equal to n, this false. Why? 11 is greater than 10. Now what will happen? It will 16. come here and it will turn it to 16. Loop terminate. And the inner while loop terminates. Now tell me how many times the jth loop has run? How N many plus times 1. the jth loop has run? Only once. Only once the jth loop has run. How many times? N times. Correct or wrong? सर 11 बार हुआ ना, n+1 होगा ना वो फिर. n+1 क्यों होगा? पहले ऑलरेडी तो 1 था. 1 था. 1 से क्या हुआ? 11 हुआ. 1 से 11 में कितनी बार इंक्रीज हुआ? 10 बार, right? 10 बार. n times the jth loop has run how many times? N times. And how many times this ith loop has run? Log n. But I can I say that for each time, for each I, the jth loop is running n times? Can I say that? No. For I equal to 1, okay, the jth loop is running how many times? N times. For I equal to 2, it is not running at all, or I can say some 0. constant number of times. Computer will take that some constant number of times, or yeah. For I equal to 4, again some constant number of times, or yeah, this will happen. At least one checking will be there, right? J less than equal to n. For this, at least one operation will be done. Okay, again for I equal to 8, one number of 1. For I equal to 8, again one operation will be done. So how many operations in total I am performing? Can you tell me? N plus 1 plus 1 plus 1. Is it true? So what's my time complexity? Can I say big O of n? What's happening? The ith loop is running log n times, but only for the first time. Only for I equal to 1, the jth loop is running n times. So what will happen? How can I represent that number of operations? Big O of log n plus n. Can I say this? Log n to run the for loop and n to run the jth loop once. Effectively, this is equal to big O of n, because log n is way smaller than n. I have to keep the maximum one. This is equal to big O of n. Tell me now, is it clear how I am doing this? सर वो n+1+1 एक बार फिर से बताइए कैसे आया? n+1 क्या बोला मैंने कि यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया तो यहाँ पे क्या आ रहा है? n आ रहा है फर्स्ट के लिए, राइट? ओके. n आ रहा है फर्स्ट के लिए और बाकी सब के लिए सम कांस्टेंट नंबर ऑफ ऑपरेशंस होगा. एक ही कंपैरिजन होगा ना. तो कांस्टेंट के लिए आपने 1 कंसीडर किया. हाँ, एक ही कंपैरिजन है वाइल में. j इज लेस देन इक्वल टू n. जस्ट वन कंपैरिजन के बाद ही पूरा स्किप हो जा रहा है. तो क्या कितना ऑपरेशन हो रहा है? जस्ट एक कंपैरिजन, वन ऑपरेशन. तो चलो और थोड़ा क्लियरली देखते हैं कि हो क्या रहा है. ठीक है, और थोड़ा क्लियरली देख लेते हैं. अच्छा, मुझे दूसरे पेज पे चले जाने दो. सो फॉर I equal to 1, what's the number of operations? N for the jth loop. Rest for rest i's, the number of operation is 1. How many times the I is running the ith loop? Log n times, right? So can I say
can I say, just see, for I equal to 1, it is n. For rest of log n minus 1 values, for rest of log n minus 1 values of I, it is one operation. How many times the ith loop is running? Log n times in total, right? For the first time, I equal to 1, it will do n operations for the jth loop. And for rest, what it will do? Only one operation. So there, how many values in rest are there? Log n minus 1 values, true or false? So what's my total number of operation? N plus log n minus 1. Okay, big O of n plus log n minus 1. So I can neglect these terms. These are way smaller. Okay, way smaller than n. So what's my time complexity? Big O of n. Is it clear? Yes. Tell me. Tell me, can you understand this? What is happening? Or any doubt is there? I know some difficulty will be there because you are doing it for the first time, majority of you. You will get once you practice more and more. And don't think that this time complexity we are leaving just by doing once. Till the entire data structure algorithms will be going, we will be having time complexity for each lecture. Don't at all worry. Okay. Only one is telling me, yes sir, done. Rest. Done, sir. समझ आ गया कैसे हो रहा है? एक दो बार और ट्राई करेंगे अगर कुछ डाउट रहेगा ना एक दो, हाँ बिल्कुल, तो हर रोज करना है अभी, ठीक है? बट बेसिक समझ में आना चाहिए, तो उसके लिए एक दो बार ट्रायल में शायद बेसिक बिल्कुल। समझ में आ जाए। अभी रोज होगा ये टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑलमोस्ट अभी रोज शुरू होगा. डोंट वरी एट ऑल. Sir, please one time explain about this. Okay, just give me 2 minutes to switch on my charger. Okay. Yes, tell me, what's the doubt? हेलो सर. बोलो. सर ये जो लॉग एन वगैरह है, इसको थोड़ा डिटेल में समझाना, क्योंकि थोड़ा समझ में इसी में ही कंफ्यूजन हो रही है ज्यादा. क्या कंफ्यूजन है बताओ मेरे को, कंफ्यूजन क्या है? मतलब कि सर एक बात बताओ, एक मिनट रार भाई. सर आप है ना एक बात बताओ, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है, आप है ना बाउंसर पे बाउंसर डाले जा रहे हो, हम सिर्फ डक कर रहे हैं इस पर्टिकुलरली इस टाइम कम्प्लेक्सिटी. तो आप मतलब बता दो एक बार अच्छे से, तो फिर ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, और कुछ नहीं. मतलब सारे लोगों के लिए सारे लोग डक ही कर रहे हैं उसको. ठीक है, समझ आ रहा. आपको रिप्लाई भी नहीं आ रहा. Okay, let me explain this problem. Continue. Sorry. See, यहाँ पे हो क्या रहा है? Okay, what was the question? I equal to 1, j equal to 1, right? Yes. Okay, fine. What was happening? While I is less than equal to n, correct? N is my input that I was taking. Rest. Next kya? Rest, what was I doing? While j is less than equal to n, right? Then what happened? What I did here, j equal to j plus 1. j plus 1. And next, outside the loop, I equal to yeah, I into 1.
I into 2. Okay, now tell me how many times this one. Okay, initially I is at 1, right? I equal to 1. Now this condition is true, that means this loop will be executed. Is this clear or not? That yeah, if first in while loop this condition will be checked, and then if it is true, then it will come here, come inside the loop to execute further. Is this clear, or still you are having doubt in here also? Okay, sir. Okay. Yes, sir. It's clear. Okay, fine. Next, what will happen? This, there is an inner while loop, right? Inner while loop inside the outer while loop. True. What will happen? Condition for this while loop will be checked. If this is true, this inner line will be executed. Here, is it clear? Okay, now see, if this line is getting executed, what will happen? Value of j will be increased by 1. J equal to j plus 1. Whatever is the value inside j, to that add 1. This is the meaning. Okay, increased by 1. Now next what will happen? It will go back here, right? Because the while loop is still not ended. Inner while loop is still not ended. What will happen? Again, this condition will be checked. Okay, see, value of j is 2. Let I have taken value of n to be 10. Value of j is 2. 2 is less than equal to n, right? Now what will happen? Again, this line will be executed. Okay, fine. Value of j increased by 1. It is 3 now. For 3, will the again, it will come back again to the while loop. For 3 again, will it be executed? Is 3 less than equal to 10? Is it or not? True. Now what will happen? Again, value of j will be incremented by 1. Value becomes 4. How many times this will happen? Can anybody tell me? 11. 11. Till, okay. Till the time value of j becomes, the last value of j is 10, for which the loop will be running, right? When it becomes 11, this inner loop terminates. Okay. Okay. Fine. Next, loop terminated. Now it will come here. I equal to I into 2. What will happen? I equals to Value of I is multiplied by 2. So it becomes 2. It goes back here. It goes back here. Am I doing correct thing or am I wrong? Now tell me. Oh, flow of the loop, how the loops are working. Is it clear to all of you? Yes. Yes, sir. Or still there is doubt in loops also? Okay, fine. Now see, value of I is 2, right? Value of I is 2. Is 2 less than equal to 10? Is 2 less than equal to 10? This is true, right? Now what will happen? It will come to the inner loop again. It will come to the inner loop again. Now it will check while j is less than equal to n. Now see, value of j is 11 already. Condition is checked. For condition checking, we do exactly one operation. This is what we have discussed in the first class, right? Condition checking, assignment, taking input, printing, all these things require how much operation? One operation. Condition will be checked, one operation for that. But will the inner statement be executed anytime? No. No, right? Because the condition is false. Am I correct here? Value of j has become 11 already. And value of n is 10. So condition is becoming false here. This loop will not be executed now. Is it clear here that what's happening? तो I का वैल्यू 2 कब हुआ? जब I पे इस फर्स्ट जब ये jth loop Okay, first j लूप execute का हुआ, खत्म हो गया, ठीक है? Now for I equal to 2, this jth loop won't be executed.
Are all of you getting this? Have some responses. How can I understand? What will happen? This entire block will be skipped, and what will happen? I's value of I will be again multiplied by 2. Value of I becomes 4. It goes back here again to the while loop. What will happen is 4 lesser than 10. True, right? It comes here to the while loop again, inner while loop. Again, it will check the condition. Is j lesser than equal to n? For this, again, one operation. But here the condition is false. This block again won't be executed. Again, it will come to this line, I equal to I into 2. What will happen? Value of I increases or gets multiplied by 2. So now tell me, for I equal to 1, we do n operations for j. We do n operations for the jth loop, correct or wrong? And how many times the ith loop is running? How many times? How many times the ith loop is running? Log n. Tell me a bit. How many times the log it is running? 10 times, sir. 10 times. Ith loop. For Log one, n. I is running 1, 2, 4, 8. At I equal to 16, it will break, right? The ith loop will not work. What's happening? I is getting multiplied by 2. See here. Value of I is increased. How? It is getting multiplied by 2. It's not getting added by 1. So how many times the ith loop will be running? 4 times. In terms of n, what can I say? 4 Log times n. when. So in terms of n, I can say it is running log n times. सर बोलो. देखो आपका पहले तो जे लूप 11 बार ओके 11 बार उसने टाइम लिया ठीक है. फिर उसने आई ठीक है. आई वाला जो पार्ट है उसको 4 बार घुमाया ओके और आई वाला पार्ट 4 बार ठीक है. घुमाने के लिए उसने यहाँ पे 4 बार घुमाया या मतलब वाइल लूप के अंदर वो फिर से वाइल लूप पढ़ने के लिए जाता है ना तो वाइल लूप भी वो 4 बार पढ़ने जा रहा है ओके तो वो 4 ऑपरेशन हो गए फिर नीचे हमारे आई के 4 ऑपरेशन हो गए और इसके जे लूप के 11 ऑपरेशन हो गए तो इस चीज में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम क्या पकड़े कभी भी इस तरीके से तो नहीं पकड़ेंगे कि 11 हुआ या 4 हुआ. हमेशा n के टर्म्स में पकड़ेंगे. n की वैल्यू की n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है. यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ कि 10 है. ठीक है. सो फर्स्ट टाइम फॉर i इक्वल टू 1 jth लूप रन्स 11 n times. Loop runs n times and rest for log n minus 1 times. I की total कितनी टाइम रन कर रही है? log n time. I is running total of log n times. For one time it is doing n operations with j. सर यही चीज हमारा log n टाइम जो वाला है ना log n टाइम वाला पार्ट या फिर बिगो n वाला पार्ट वो हमारा क्लियर ही नहीं हुआ ना सर. मतलब गलती हमारी भी है सर मैं मान रहा गलती हमारी भी है हमने ध्यान नहीं दिया था बट वही पार्ट सर क्लियर नहीं हुआ इसीलिए हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर ही नहीं हुआ. Always see ऐसे हम गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 2 हो रहा है 1 2 4 8 16 सीक्वेंस ऐसे बन रहा है ना आई का. किसी भी लूप में देखना आई का सीक्वेंस जे का सीक्वेंस ऐसे बन रहा है. अगला नंबर जो है प्रीवियस नंबर के मल्टीप्लाइड बाय 2 करने से आ रहा है. ओके प्रीवियस नंबर हाउ आई एम रिसीविंग दैट the next number I am receiving by multiplying the previous number by 2. So in such cases we say that and ये जो and value of I is always less than equal to n, we say that the complexity or the how many times the ith loop has run log n times. Can you remember this? As of now remember because बहुतों को log नहीं आता है यहाँ पे मे बी. ठीक है. LC आसान हो जाएगा. सर उसको आप पावर में लेके एक बार समझा दो तो वो जल्दी समझ में आ जाएगा. 2 to the power 0 2 to the power 1 या ये केस स्पेसिफिक है.
how I is running here? I is taking the values 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3. Okay. For all these values, my ith loop is running. Can I say that? 1, 2, 4, 8. Yes, sir. Okay, right? So 2 to the power x should be less than equal to n, right? For the loop to run. Yes. So what is, so how many times X my has loop been is running? operated. X operations. Why? It starts at 0 and ends at x. So can I say the number of operations is x? Okay. Okay. So what will happen? How can I calculate the value of x? If such is the case, the value of x is always log n. Okay. Okay. Even if there is 3 to the power x, 4 to the power x, 5 to the power x, anything is there, and it should be less than equal to some variable n, always the complexity is log n. Okay. Is it clear now? Yes, sir. Fine. Now, so tell me how many times the ith loop is running? Log n times. So for the I equal to 1, for the single case, what's happening? The jth loop is running n times. And for rest, only one operation for the jth loop. So what's the sir. time complexity? Yeah. तो सर आउटपुट देते टाइम लॉग इन टाइम्स की वैल्यू देनी होती है या नहीं आउटपुट देते टाइम मतलब अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा गया है तो हमें सिर्फ इतना ही बताना है ना कि लॉग एन टाइम रन यस लॉग एन टाइम रन कर रहे हैं एन टाइम रन कर रहा है तुम्हें वो बताना है ओके सो हाउ व्हाट्स माय टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस व्हाट कैन आई से n for the first operation and for log n minus 1 times how many operations? One operation. So what's my total time complexity? Now enclose this inside big O. Total number of operations you have done, enclose that inside big O. What's my time complexity? I can say log n and some constant value. These are too small. You can discard it. Effectively, this is big O of n. So I have a doubt. Yeah, tell me. So why are we adding it? Will not be it multiplied because there is a loop inside loop. Which one? But see now how many times this loop is getting executed. Jth loop will run only once. When? For I equal to 1. That's it. After that, no jth loop operation will be done. Because value of j has already increased the value of n. So only you can say some constant operation for the entire inner jth loop. Okay? Okay. Yeah. Okay. Is this question clear? Whatever question I have given, all of them, please practice. Yes, sir. So what will be the final output? Big O of n. Or you can keep the entire thing, big O of n plus log n. Okay, no problem on that also. You can keep this big O of n plus log n. Okay. Is this question clear? Can I explain now? Have I explained it correctly? Yes, sir. Now, Yes, sir. yeah. Or any bouncers? No, sir. It's Please, all of you now. All of you can understand this? Yes, sir. Okay. Always only one thing is the key to crack these questions. What is the number of operations I am doing? Okay. Apart from that, there is no other way to judge the time complexity. Try calculating what's the number of operations effectively that you have done inside your problem. That's all. From the basics, I have taught you a bit. That's all I will say. Okay, third question, can you do?
Third question, can you do? Who is saying I cannot? Just check now, what's the number of operations? That's all, nothing else. Okay, see, what is it? N is the input, right? I is 1. J is also 1. Done. See, what is it? While J is less than equal to N. This is it, right? First. And then inside that, while I square is less than equal to N. This is it, now question. What will happen? I equal to I plus 1. And after this loop, what is happening? Where is it? J is equal to J into 2, right? Now I would like to ask first, how many times the jth loop will be running? Outer jth loop. Have some response. So log n times. Yes, the jth loop will be running log n times. Am I correct or wrong? Jth loop will run log n times. Am I correct or wrong? Yes, correct. How many of you agree with me here? I required some response. Then only I will go ahead. Yes, correct. Yes. Two, 3 persons. Correct, sir. Actually, my internet is not working properly. That's why I'm not getting any. But still, I think there are 16 persons today, and still I'm getting response for 4 or 5 persons. Jth loop will be running log n times. If n equal to 10, let's suppose how many for j will be having values 1, 2, 4, 8. At j equal to 16, the loop terminates. As per this condition, j equal to j into 2. Now coming here, observe. While I square is less than equal to n, I equal to I plus 1. What's the problem here? Can anybody detect? First check. J equal to 1, right? For this condition, j equal to 1. Initially j is 1. This condition is true. This will come to the inner while loop. Now tell me, what's the value of I? I is initially 1. So I square, what's the value of I square? 1. 1 into 1, is it less than equal to 10? True. True or false? True. So what will happen? I will be increased by 1. I equals to 2. I will be becoming 2. Now see, it will go back again into the while loop. What will happen? Again, 4. what will be checked? 2 squared. Is it less than equal to 10? True. True, right? What will happen? Value of I will be increased by 3. Increased by 1. It सर will become 3. कैसे सर वही तो बताओ आप कैसे कैसे मतलब? I का वैल्यू अभी ऊपर में कितना हुआ 4. हाँ 3 हुआ ना, अब फिर वापस जाएगा ये लूप में. Again it will go back to the loop. I square means 4 हुआ ना सर 2 into 2. हाँ तो 4 is less than equal to n है ना. हाँ ट्रू है ना. तो हाँ. I की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दो. अच्छा 3. So it is becoming 3. Next it will go back again to the while loop. What's happening? Now tell me. 25. 3 into 3 into 3 9. is less than equal to 10. True or false? True. It will run. Okay, now change the value of I by 1. It is becoming 4. 4. Now tell me what will happen. 4 into 4. 64. Less than equal to 10, false, right? This loop breaks here. Yeah. And value of j now will be becoming multiplied by 2. Will be multiplied by 2 now. What will happen? J will be becoming 2. 2. It will go back to the outer while loop again. 2 is less than equal to 10, correct? 2 is less than equal to 10. It will come to the inner while loop again. Now, value of I is what? 4.
Is 4 into 4 less than equal to n? False. Only one checking, right? Only one checking. Only one operation will be done for the checking purpose. Entire loop will be now skipped, and again value of j will be increased, multiplied by 2. Similarly, for j equal to 4, this will be true. It will become 8, and at 16, the entire thing will be going up. Entire loop will terminate. Okay, now my question is, how many times the inner jth loop is running for j equal to 1? Can anybody tell me? I square is less than equal to n. So can I say I should be less than root n? Can I say this? Yes, sir. Yes. I square is less than equal to n, so I should be less than equal to root n, right? So I cannot do operations beyond root n with the ith loop. Is it true or false? That means I cannot add more than root n once inside I. Am I correct or false? Value of I can only be incremented root n times, not more than that. I equal to I plus 1. This operation can be done at most root n times, at most. Maximum. तो इस केस में सर रूट n टाइम्स मतलब 5 टाइम्स, राइट? Root n times is the number of times jth loop is running for I equal to 1. Basically 5 times, right? Sorry, sir, not jth loop, but the ith loop is running, because ith is the inner loop here for j equal to 1, right? So now what's my time complexity? What should I get? For I equal to 1. For I equal to 1. How many times? Sorry, again mistake. For j equal to 1, how many times the root ith loop is running? Can anybody tell me? Root n times. So, and for rest log n minus 1 values of j, we are doing exactly one operations. So what's my time complexity? We go of root n plus log n minus 1. Neglect all. This will be effectively big O of root n. Tell me, what's the problem here? Now, what is the doubt for this question? Tell me. हेलो Yeah, बोलो. सर इसमें प्लस क्यों हुआ क्योंकि ये तो नेस्टेड लूप है ना नेस्टेड लूप है पर देखो jth लूप को देखो एक बार से ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं होता है. See here, what is it? J's value starts at 1 and once it becomes 4, the loop j will not be executed again for in again. Sorry यार, मैं बार-बार मिस कर रहा हूँ. Value of I for once it becomes 4, for any other value of j, it will not get executed again. So what is happening? See, always the condition is I square is less than equal to n, right? For the inner ith loop. What should be it? I square is less than equal to n. So how many times I can add 1 inside I? How many times? It is equal to root n times. Okay, what's happening? I square is less than equal to n. If this condition is true, I equal to I plus 1. This line will be executed. How many times you can do that? Root n times. Exactly root n times.
Now tell me what's the doubt again. How many times I can add 1 inside my value of I? Root n times. So why did you neglect that log n minus? Log n is very small value as compared to root n, okay? Very small value. That's why it will be neglected. Now let me come to some points. Okay, yeah. Let me come to some points. Note one thing down. Big O of n square is greater than big O of n is greater than big O of log n is greater than big O of 1. This is the sequence. If I write big O of n square plus n, since this n square is greater than n, I can neglect this. Any smaller value comes, big O of 1, log n, anything comes with n square, I can neglect them all and can simply say it is big O of n square. Okay, if I write big O of n plus log n, after the plus only, after the plus, if any smaller term is there, you can neglect them. Okay, you can neglect them. Similarly, if more powers are there, big O of n cube is there, that is greater than n square. Sir, here what is the Sir, Yes, sir, sorry. if it was n plus n square, then if there is Then it n will plus be n square, if it is big O of n square plus n, you can keep it as it is, no problem. But effectively, this is big O of n square. I can neglect the smaller term. I can neglect sir, the I am smaller asking term. n plus n square, n Yes. plus n square. It is it na n plus n square. Big O. This is what you are asking, na? Yes, sir. So this n is smaller than n square, right? I can neglect this. Neglect this, and effectively the time complexity will be big O of n square. Okay. The smaller terms you can neglect, no problem. Yeah, who was asking? So वो n square बड़ा है ना, तो arrow I guess right side में ही है. कौन सा एरो? नहीं जो ओ आपने हो arrow बिल्कुल सही कहा. बट सर आंसर में डिफाइन टू बिग ओ एन और बिग ओ 1 ही से ही करते हैं ना उसको प्रॉपर्ली. किसको? आंसर अब जो हम लोग को उसको सिंटेक्स वाइज बिग ओ एन ही लिखते हैं ना. Big O of n cube is greater than, sorry मैंने थोड़ा गलत लिखा था. वो उन्होंने arrows थोड़े गलत. Yeah. Big O of n, big O of log n. सर लेकिन बिग ओ ऑफ एन क्यूब और एन स्क्वायर रहेगा आंसर में, तो बिग ओ एन ही लिखते हैं ना. नहीं, ऐसा नहीं होता. n क्यूब रहेगा तो n क्यूब लिखोगे, n स्क्वायर रहेगा तो n स्क्वायर लिखोगे, n रहेगा तो n लिखोगे. सबका अपना अपना ये है, जगह है. ठीक है, ओके. ऑर्डर ऑफ वन लॉग एन से भी छोटा है. हाँ, ऑर्डर ऑफ वन मतलब कांस्टेंट, एकदम जस्ट इन नो टाइम, ऑलमोस्ट जीरो टाइम, नियर टू अबाउट जीरो टाइम में माय कंप्यूटर विल बी एग्जीक्यूटिंग द कोड. जैसे कि सर हम एक एक वेरिएबल लेते हैं. यस वो यस, सब ऑर्डर ऑफ वन रहता है ना. हाँ, पूरा प्रिंट करते हैं, फंक्शन कॉलिंग करते हैं, सब बिग O of 1 में होता है. कंपैरिजन करते हैं, वो ऑलमोस्ट बिग O of 1 में होता है. उसका कुछ भी हम टाइम कम्प्लेक्सिटी में उसको कैलकुलेट करना ही नहीं है हम लोग. वो पकड़ते नहीं है नॉर्मली, वो कंप्यूटर कभी भी मतलब जस्ट कर देगा. वन थिंग रिमेंबर, बिग O of n, this doesn't mean that computer is performing one operation. This is a convention that okay, just in one operation my computer will be doing the task. Actually there is some constant k number of operations, some constant k, 1, 5, 3, 10, any number of that it may be. Okay, what about root n? Let comes to the point. Root n comes here, big O of root n. Okay, big O of root n comes here. N is greater than root n is greater than log n. Tell me, is the previous problem clear how we did it?
Who cannot understand? Tell me first. Sir, I did not understand it. Yeah, tell me what's the problem. Tell me about the big O. Yeah, which one? This one? वो तो समझ हो गया, n power of cube, n power of square. These are the complexity. Big O of n cube is greater than big O of n square. If you do n cube operations, it will take greater time as compared to Why big O we of n use square. the big O mainly? To represent time complexity of a problem. This is the notation. Okay. सर स्पेस में भी बिगो यूज करते हैं? हाँ, स्पेस में बिग O इसको यूज करते हैं. Why we use it? To represent the time complexity. Approx how much time is required by our code or program to run. Okay, that has a complexity measure. Complexity is measured in terms of what? How many operations this is requiring. Okay, for those things we do big O of n cube, big O of n square. In this notation, in this type, we represent that. बिग O ऑफ n क्यूब, बिग O ऑफ n स्क्वायर में हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि कितना टाइम चाहिए हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए. ठीक है, ये नोटेशन है. बाय कन्वेंशन एक नोटेशन है. देयर इज नो व्हाई टू इट. द वर्ल्ड हैज एक्सेप्टेड दिस, दैट ओके, इन दिस टर्म्स ओनली वी विल रिप्रेजेंट द टाइम रिक्वायरमेंट ऑफ ए प्रोग्राम. There is no why. There are more notations. There is theta notation. Okay. There is theta notation. There are more notations. Okay. But all these things we won't use. We won't learn. We will just focus on the big O notation. सर ये लेकिन हम लोग को यूज कहीं होती है क्या सर? जॉब हर जगह आप जाओगे इंटरव्यू में तो पूछेगा, बताओ इस प्रोग्राम का कम्प्लेक्सिटी बताओ. और सर लेकिन हम लोग को प्रैक्टिकली तो यूज नहीं होती होगी ना? बहुत जगह यूज होती है. जितना सर्वर्स वगैरह चलता है उसके अंदर जो प्रोग्राम्स वगैरह होता है वो बगैर कम्प्लेक्सिटी के चल कैसे सकता है. प्रैक्टिकली अगर एल्गोरिथम्स नहीं है, अगर कम्प्लेक्सिटी के सर वो मेजर तो हम लोग कोड लिखेंगे, लेकिन उसके बाद ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कोई पूछते हैं क्या? ये सब पूछेंगे. तुम्हारा अगर तुम कम्प्लेक्सिटी के अंदर कोड नहीं कर सकते तो तुम्हारा प्रोग्राम मोस्ट ऑफ द जगह फेल हो जाएगा. कौन से कॉम्प्लेक्सिटी में करना है सर? बिगो 1 में वही या तो n में? अभी तो जस्ट कम्प्लेक्सिटी सीख रहे हैं ना. अभी आएंगे हम लोग कौन से जगह पे कौन सा कम्प्लेक्सिटी लगता है. इसीलिए बताया था ना 10 to the power 8 ऑपरेशंस एक सेकेंड में कंप्यूटर मैक्सिमम कर सकता है. 200 ट्रिलियन ऑपरेशन. And 1 second is the time limit to run my code. Whatever I code, there is a time limit for it that is prescribed, and that is 1 second. More than 10 to the power 8 operations I cannot do inside my code. This is the constraint that has been given to me. Sir, what is the 1 second to complete the code? 1 second, that means once you code it, okay, once you code it and you want to run it. So while running there, you cannot get more than 1 second. Time taken. Sir, is 1 लेकिन second, sir. Yeah, time will be prescribed. This entire process will be time bounded. If your code does not run in 1 second, you will get a wrong answer, something called time limit exceeded, and this will give a less score. Okay, once you go to the interviews, these सर things लेकिन will जो be- प्रोसेसर्स न्यू आते हैं फास्ट वाले, वो लोग तो बोलते हैं ना और फास्ट चलता है, तो मतलब और ज्यादा करता होगा ना वो तो करता है. पर तुम कौन से प्रोसेसर्स में करोगे जब इंटरव्यूज में जाओगे? बट मिनिमम उसका रहता है 1 वाला जो आपने बोला. तुम्हारे लिए टाइम फिक्स्ड है. तुम्हें जो भी कोड रन कराना है उसको 1 सेकेंड में कराते हो तो कराओ, नहीं तो छोड़ दो. ये एक कंस्ट्रेंट डालता है कंपनी. ओके सर, 10 to the power 8 का. या सर मैं एक चीज बोलो. नहीं ब्रो, वो कैसा है कि अगर समझो अभी कि तुम कुछ गेम खेल रहे हो, ठीक है, उसके लिए तुमने अगर समझो उसको फॉरवर्ड जाना है तो तुमने उसको एरो की दबा दिया, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड की दबा दिया, तो उसके लिए तुमने एक कोड लिखा, ठीक है. अगर वो तुम फॉरवर्ड की दबा रहे हो, जैसे फॉरवर्ड की दबाया वैसे वो अगर बंदा है समझो तो वो आगे नहीं है, ठीक है, वो आगे नहीं है ना, तो वो जो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो वहां पे बता रहा है कि वो तुमने अगर फॉरवर्ड स्पेस दबाया, अगर तुम्हारा फोन स्लो लगने लगे, ठीक है, तो वो कोडिंग में प्रॉब्लम है. मतलब वैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ.
ओके ओके मतलब गॉट इट। उससे ओके उस तरीके से वो टाइम समझ गया ब्रो। कॉम्प्लेक्सिटी यूज होगा। Okay, tell me who is Okay. having doubt? Who is having doubt? Any doubt with the problems we have discussed? Please tell me. Anjali, I think you were asking something and you didn't ask that time. Any problem you are having? Please tell me. No doubt, sir. Previously we discussed with All done. Okay. सर वीक 6 डे 3 का सीसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या? रुको देखते हैं क्या है। Sir, most important what we want वो तो explain करो थोड़ा। What we have over say syllabus. What? Sorry, your voice got broke. Sir, sorry? most we want programs वो वामशी explain। हिंदी में बोल दो ना। सर ज्यादा समझ लेने की what we want most important problems वो तो बोल दो, ये तो समझ हो गया। Okay, okay, fine. Okay, rest. How many questions are there inside it? Sir, inside your CC. ज्यादा नहीं सबमिट किया सर मैं। Okay, yeah, fourth and fifth I guess you can do. This is very easier task. Has anybody solved the fourth one? Anybody solved the fourth one? Today CC you are telling. Yesterday CC was day 6. Oh, sorry, week 6, day 4. कर दिया सर, वो तो कर दिया, थोड़ा समझ हो गया है, वो तो एक्सटेंड करो। फोर्थ को किसने किया? Who did the fourth one? Fourth question. Sir, I did it. What's your complexity? 1 second, sir. Or what? Whatever I have taught, please take a note of that, all of you. So big O of n. How? N and M both are inputs here, right? Why big O of n? Exactly. Only Kanu is giving the correct answer. I think fourth question entirely I haven't got. Okay, try for the fourth one. This is your task. If you still cannot get the fourth one, we will discuss it. Okay. And fifth, I think the M होगा ना? n plus m होगा, हाँ. Big O of n plus m. The answer is big O of n plus m. N log n. No, n plus m. Big O of n That plus is the m. third question. Third, not fourth question, I guess, right? And sir, I'm telling about fourth question. N log n. N log? N. I don't think so. The third question, I think I have discussed right now, right? Big O of n. Big O of root n. Root n plus Yes, sir, log it n. is n plus m. I was checking in day 3, that's why. Yeah. It is n Fourth plus question's answer for day 6, sorry, week 6, day 4 is big O of n plus m. We have just discussed, right? Here, the third question. What is it? Big O of root n. See here. How is it coming? For only j equal to 1, ith loop is getting performed root n times. And for rest of the log n minus 1 values, the I is getting performed, ith loop is getting performed some constant number of times. So what's the total? Root n plus log n minus 1. This is effectively root n, big O of root n.
ओके सर बोलो अभी रिटेस्ट वाला थर्ड क्वेश्चन थोड़ा बता देंगे तो कौन सा? रिटेस्ट का थर्ड क्वेश्चन। ओके दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो, कौन सा क्वेश्चन है? सर आपको लिंक दे सर वो दिया है, सीसी तो बताया नहीं आपने पिछला वीक लिंक डे दे 3 दिया का। आपको, उसको थोड़ा अच्छा, सर वो रुको। सारे सॉल्व करा देना सर। ठीक है, कुछ अब मैंने 3 सॉल्व कराया ना, अब खुद भी सॉल्व करो, ट्राई करो सॉल्व करने का, फिर अगर नहीं होता है मैं फिर बताऊंगा। वीक डे 3 का बोल रहा हूँ, सॉल्व किया है सर, आंसर नहीं मालूम, राइट या रॉन्ग है। आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है सर डे 3 का, फॉर आई इन रेंज एन, फॉर जे इन रेंज एन, फॉर एल इन रेंज एन, फिर के फॉर लूप्स इन टोटल, फिर फॉर जेड इन रेंज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर उसकी। अच्छा, सर मुझे एन क्वेश्चन क्यूब लिखना पड़ेगा। प्लस एन, स्क्रीन शेयर करूँ नहीं मैं तो लैपटॉप में। प्लीज प्रोवाइड है भाई, ये तो हो गया है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन द कॉन्सेप्ट। अच्छा, मुझे भी साइन अप करना पड़ेगा? कोई दिखाओ, अपने वहां से दिखाओ, फिर ही कर सकते हैं, अभी फिर मुझे पता नहीं। सर तब तक आप वो सीसी के करा दो ना, मेरे को सिर्फ हाँ डाउट क्लियर दिखाओ करना है, दिखाओ, आंसर क्वेश्चन राइट है दिखाओ, रॉन्ग। क्वेश्चन दिखाओ। सर मेरा लैपटॉप में नेट मेरा नहीं चल रहा है, फोन का नेट कनेक्ट किया है तो फोन में वो किसी के पास क्वेश्चन है? वीक Yes, 6 sir. डे सर 3 का? वो यूनिवर्सिटी में मिल शेयर जाएगा। कर रहा हूँ, Can I share? शेयर कर Okay, रहा हूँ। okay, just wait. Let me stop the sharing. Okay, yeah, now share. The axis I mean, yeah, now share. चैट बॉक्स में दिया है सर। Okay, what is it? वीक 6 से कौन सा क्वेश्चन चाहिए बोलो? फर्स्ट बिग ऑफ क्या होगा बोलो? हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार रन कर रहा है? के लूप से। सर एन क्यूब प्लस एन। कैसे एन क्यूब भाई? के लूप है, 3 लूप सर, रहता है तो मैंने क्या same करते लिखा हैं? है। के तो नीचे है ना सर, ऊपर तो 3 लूप है ना एन का। लूप के नीचे अंदर के लूप अंदर है, दूसरा लूप। नहीं लूप के अंदर लूप है, के टाइम्स लूप है, इसका मतलब है के नेस्टेड लूप्स है। देखो बिलो आर नेस्टेड के लूप्स, के लूप को नेस्ट किया गया है। आई के अंदर जेथ लूप है, जे के अंदर एलथ लूप है, एल के अंदर केथ लूप है। वैसे वैसे ही तुम्हारा के टाइम्स लूप चल रहा है। So n की पावर k times. यस, इट विल बी एन की पावर के टाइम्स n to the power Okay, k, big of n to the power big k. of n to the power k is the time complexity. Try solving this. sir, I'm giving you the answers. Big of Yeah, n to the power sir. k. और सर क्वेश्चन नंबर 2 का सर बिगो 1 होगा ना? दिखाओ दिखाओ क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन 2। उसी में वही उसी same. में सर। ओके यार, मेरे पास एक्सेस नहीं है, हु इज स्क्रॉलिंग इट? सर इसमें दिया ना चैट बॉक्स में। ओके, तुम्हारा सर स्क्रीन एक्सेस शेयर करो। सर वो यूनिवर्सिटी पोर्टल से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया था। स्क्रीन शेयर करूँ क्या सर? नहीं ठीक है, किसी ने ऑलरेडी किया है। सर स्क्रीन शेयर कर रखा है। अरे अभी तो किया ना, ये वाला क्वेश्चन तो अभी सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। हाँ तो वो उसका आधा ही पार्ट है वो। हाँ उसका आधा पार्ट है। सर कर दिया वो मैंने। रूट रूट 10 टाइम्स होगा, चलेगा। रूट 10 टाइम्स चलेगा। I square is less than equal to n. We have just solved it, right? ओके सर। Okay. और सर नीचे वाला n प्लस m होगा ना? हाँ नीचे Question वाला number n 3. plus m होगा, क्वेश्चन नंबर 3। ओके सर, और क्वेश्चन नंबर 4 सर एक्सेस कर सर सकते क्वेश्चन नंबर 4 में तो सर वो 100 में रेंज में स्टॉप हो जाएगा ना? दिखाओ big O n equal to I in range and print time complexity, यही पूरा क्वेश्चन है। जस्ट एक बार स्क्रॉल करके नीचे जाओ। हाँ सर वही पूरा क्वेश्चन वही है। नीचे 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 नंबर नीचे 4 सर। एन टाइम चलेगा ना लूप। What will be the, okay yeah, tell me what will the time complexity for it? Big of n. Three nested loops are there. Observe 3 nested loops. क्वेश्चन नंबर 4 सर। Question number 4, 3 nested loops. I inside I j. सर वो सर Inside क्वेश्चन J नंबर के। 3 है वो। क्वेश्चन नहीं नंबर नहीं 4 बोल रहे हैं सर। 4, मैं तो 4 की बात कर रहा हूँ। 4 की बात हो रही है ब्रो। फोर्थ तो एक्सप्लेन करो सर एक बार। अच्छा मेरे इसमें आधा ही आ रहा है। ओके, क्वेश्चन भेजो मुझे कोई फोर्थ का। हाँ सही है बराबर है। जस्ट वेट मुझे लिख लेने दो, हाँ सर आप पहले इसको ड्राई रन बता दो। n is the input, right? So will it be n square? n Okay, let me see. n is the input for I. Tell me, for I in range, what is it? फॉर जे इन रेंज आए।
Now For for I in range n, n. and for J in range I. j in range I. For nested is for k in range 100. For k range in 100. just let me write it. Time complexity. Print Sir, time here for complexity. I in range of n, user give the and we will give the input. And that will there after that some print statement, right? Print Is time it? complexity. Range Yeah, of whatever. Yeah. Then Okay, yeah. for j in range सर of I. सर आप ये ओपन बोर्ड पे लिख रहे हैं क्या? ओपन बोर्ड में लिख रहा हूँ. चलो सर स्टॉप बंद कर. शेयरिंग कर दो ना. हाँ करो. सर आप वो यूनिवर्सिटी पोर्टल से डाउनलोड कर लो क्वेश्चन पेपर, जल्दी हो जाएगा, फिर ज्यादा किसी और को शेयर नहीं करना. ठीक है. See, this is the question, right? For I in range n, for j in range I, for k. Now tell me how many times the inner loop will run? This kth loop. Kth loop. 100 times. And fixed, it will be 100 times. हाँ ये तो हो गया सर. and ये तो समझ हो. Big of one. j in range. ये confirm है 100 Yes, times sir. ही चलेगा. अब now tell me how many times the j will be running? Jth loop will be running. I times. I times How? will be That running means I will start at 0, right? And will end at n minus 1. Am I correct or wrong? Yes, correct. Huh? Correct. How many times j will be running? Jth loop. First it will run 0 times. Then it will run 1 time. Then 2. Similarly, at the end, j will be running n minus 1 times. True or false? Then True. yes sir. Okay. And now for each j, kth loop will be running 100 times. True or false? True. Yes sir. So how many times the jth loop is running? Can you tell me? Total number of operation. What can I say? N minus 1. 0 plus 1 plus 2 plus 100. n minus 1 into 100. Can I say Answer. this? Yes sir. Total number of operation. Can I say this? Yes. Who agrees and who doesn't? Into n minus 1 भी होगा फिर. Who agrees and who doesn't? Sir, here Can I say- we are taking n is equal to input for I in range of n. ये तो हो गया. For j in range of I. Yeah. J in what we range of have I. given- Now the inner loop, kth Sir. loop will be running 100 times. Sir, in J range of I, it will run 100. Yeah. For each value of j, K loop will be run for whatever, 100 yeah, times. kth loop will be running 100 times. So for C, first there will be I equal to 0, j will be running 0 times, right? Then I will be 1, j will be running how many times? 1 time. Correct or wrong? I equal to 2, j will be running 2 times. Similarly, Yes sir. it will run n minus 1 times at Then- for I So equal then to we n go minus 1. 1. So how many times the jth loop is running? 1, 0, 1, 2, 3 up till n minus 1. सर एक हाँ. बार फिर से स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कीजिए सर. Okay, पहले all of you give me the answer. How many times the kth loop is running? सर ये साइड का भी 100 times, sir. How many? 100 100 6 times. times. Right? मतलब 99 है ना. हाँ वही 0 से स्टार्ट होगा 199 तक जाएगा 100 हो गया ना पूरा. 0 to 100 n minus 1. 100 times ऑपरेशन होगा. Now tell me, so this 100 will be executed for each value of j. Yes. True or false? Yes. For each value of j, I will be having 100 executions of kth loop. True or false? True. Only one is saying. Rest. Sir, लेकिन वो K in range 100. Okay, right, got it, sir. Right. For each value of j now, for how many times the jth loop will be running? That depends on I, right? Depending upon I, the jth loop will be running, and depending upon j, the kth loop will be running. Something like this is happening. Now, when So then this is constant, na? this k is constant. K will be 100 only. No changes here. But sir, see it here. will stop after that, na? 100. Yeah, after that it will stop. Now for I, when I is 0, j is running 0 times. Sir, When here I K is 1, for I, when I is 1, j will be running
one one time. time. When I is 2, j is running 2 times. Similarly, when I, last value of I will be n minus 1. Correct or wrong? So at this moment, j will be running n minus 1 times. So how many times the kth loop got executed? N minus 1 plus All n na? minus 1 into How many 100. times? First. Okay, see here. Kth loop is running for j equal to 0. How many times the kth loop will be running? 0 into 100. Correct or wrong? 0. Now for j equal to 1, kth loop will be running 1 into 100. Now j equal to 2. How many times the kth loop will be running? 2 into 100. Similarly, till the last, kth loop will be running n minus 1 into 100. Add all of them. Add all of them. What will be my answer? 100 into 0 plus, okay, yeah, 0 plus till n minus 1. What's my answer? 100 into n minus 1 by 2. So what's my final complexity? 100 सर वो into, कोड पूरा कांस्टेंट क्यों नहीं हुआ सर? 100 के बाद तो स्टॉप हो जाएगा ना कोड पूरा ही। भाई ये तो बार बार होगा ना, ये लूप तो बार बार होगा। मैं k को तो बाहर कहीं एग्जीक्यूट डिक्लेयर नहीं कर रहा ना, k यहीं पे डिक्लेयर हो रहा है अब बार बार। Sir, here we giving the k range constant 100 na. Yeah, range is It will constant be 100. run before 100. For each value of j, it will run 100 times. I am again and again here declaring k. K is not fixed here. Anywhere outside my loops, no k is declared. So inside the kth loop, it will get declared again and again. Okay, reinitialized always. Don't mix it up with while loop I that we have taken just before just few examples previously. So what's the total number of operations? 100 into n minus 1 by 2. How will you break that up? 100 into n square by 2 minus n by 2. So what can I say? 50 into n square minus n, right? So what's the time complexity? 50 n square. Is it big O of 50 into n square minus n? This is 50 is constant. Ignore. N is lesser than n square. Ignore. It is big O of n square. Getting it? How we have solved it? Start practicing. All of you will start. All of you will get the same flow that today I am solving with. Once कभी हमने भी शुरुआत की थी ये सब में. Okay? एक दिन में नहीं होता. Regular practice चाहिए होगा. सर प्रॉब्लम रेगुलर प्रैक्टिस का नहीं है। रेंज का 100 वाला बोल देंगे दोबारा। बोलो क्या हुआ? हेलो सर वो के इन 100 रेंज वाला एक बार लास्ट वाला लाइन दोबारा बोल देंगे। बोलो कौन सा प्रॉब्लम क्या हुआ है? फॉर के इन रेंज वो 100 पे क्यों रुकेगा नहीं, बस वो डाउट में रह गया। के यहाँ पे क्या हो रहा है? बार बार रीइनिशियलाइज हो रहा है ना। पहले हम क्या कर रहे थे? व्हाइल लूप यूज कर रहे थे। बार क्या किया था? जे को बाहर डिक्लेयर कर दिया था। जे वाज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द लूप्स, राइट? इसी की वैल्यू फाइनल हो रही थी। बट यहाँ पे मैंने क्या किया? फॉर लूप फॉर के इन रेंज। के इज अ न्यू वेरिएबल ईच टाइम इट इज रनिंग। के क्या हो रहा है? बार बार रीइनिशियलाइज्ड हो रहा है। यहाँ पे क्या है? कोई अगर मैं वैल्यू नहीं देता हूँ, क्या होगा? के डिफॉल्ट वैल्यू के को मिलेगा ना स्टार्ट करने का। वैसा कुछ तो व्हाइल लूप में होता नहीं है। स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू नहीं होता ना। एंडिंग वैल्यू का कंडीशन होता है बस। तो सर ये लूप एंड नहीं होगा? कौन सा? ये एंड होगा। जैसे के स्टार्ट कर रहा है 0 पे, के का वैल्यू जैसे 100 हो गया, के स्टॉप हो जाएगा बस। बट ये प्रोसेस बार बार होगा। सर here इक्वेशन के बारे में थोड़ा बोलो सर। 100 into n minus 1 by 2 ले लिया ना इधर। हाँ, क्या प्रॉब्लम है बताओ? 2 से 100 को डिवाइड करो तो 50 हो जाएगा। 2 कॉमन आ गया इसके बाहर।
Here Sir, वो in question the number what we 5 का आंसर n plus n by 2. Your voice is breaking, Amar. Yeah, Chintam, tell me. Hello, sir. Am I audible? Yeah, now you're audible. sir here what we have taken in Sir, वो that Okay, one by one, one by one. Chintam, tell me first. ये इक्वेशन अप्लाई हो जाता है. मतलब समझा नहीं. 50 यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है. हाँ ये इक्वेशन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दो बोला सर ने. ये टोटल नंबर ऑफ 100, ऑपरेशन, 100. टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन इतना मिल गया. क्या किया ना, n स्क्वायर बाई 2 माइनस n बाई 2 ऐसा था ना. टोटल d इंटू 100 था. ठीक है. 2 को तो कॉमन लेंगे, जो डिवाइडेड बाई 2 है दोनों में से कॉमन आ जाएगा. किसके बराबर है, n स्क्वायर माइनस n इंटू 50 कर सकते हैं ना. 2 से क्या किए, 100 को डिवाइड कर दिया. टोटल कितना आ रहा है, n स्क्वायर माइनस n इंटू 50 आ रहा है. तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन मेरा कितना हुआ, n स्क्वायर माइनस n इंटू 50. करेक्ट. क्या लिख सकता हूँ, बिग O ऑफ 50n स्क्वायर माइनस 50n, राइट. n is smaller than n square. I can neglect this. As well as 50 is what, a constant. I can neglect this. Okay. What's my final time complexity, big O of n square. We don't need to keep any smaller power thing or any constant inside our big O notation. Just this n square, nothing else. If we have given the n value sum of 18, Yeah. then after Sorry. equation and we have given 18, sorry, 18 number we have given for Yeah. the n. Then after what will we There get is no the fixed thing. resulting? Okay. This is a really big thing. And don't think that you will be giving it 100 or some 18 value, something like that. What if you run it again and again 100 times at any scenario with any value? What's the complexity of this particular code? That is big O of n squared. N is a variable here. Okay, once you are taking a variable, you have to represent in terms of that variable name only. You cannot fix it for a particular value. Okay. Yeah, Amat, bolo ab. yes, sir. Bolo. Sir, in question number 5, what is it? It is like n is integer input, then for I in range n, j is equal to 1. Then while j is smaller than or equal to 12, then for k in range n by 2. So the answer will be n plus n by 2. Where is it? Where is it? Which question? Sir, वो same question paper का 5th question. ऐसा कुछ है? लगता तो नहीं. For Yes, sir. I n is equal to int, for I in range n, right? Print time complexity, something like that is coming. No, for sir n integer input है. For I in range n. Question number 5 आप सर open करो, उसमें देखिएगा. Okay, यार कोई शेयर करो तो, यहाँ पे सही नहीं है. Which question is it? This one, sir. Okay. Great question, right? For k in range. ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? एक बार ट्राई करोगे? सर n plus n by 2 लगा मुझे. लगता तो नहीं. इसमें n is equal to n by 2 कुछ होगा ऐसा. p को n plus n by 2 ऐसा कुछ. चलो इसको भी देखते हैं. रुको मुझे लिख लेने दो एक बार. First is what? N is an input, right? Next, what is it for? I in range of n. Next, j is equal to 1. J equal to 1. Next, for while j less than is equal to I square. While j less than equal to I square. Next, for k in range of n by 2. For k in range of n by 2, right? Then after print time complexity. Print, okay, print something. Okay. Okay, let me share it now. You can stop sharing, Ibrad. Yeah, see, this is the code, right?
N is an input. Okay. Tell me this. Okay, yeah. How many times the k will be running? Kth loop. How many times the kth loop will be running? N by Sir, N half times. of the n. N by 2, right? Each time. For each value of j. For each value of j, k loop how many will be times run it will be by running? N by 2. N by 2. Now, how many times the jth loop will be running? I square times. Is it Root I times. I squared times, right? I squared times. J is running I squared times. This is okay. Sorry, yeah. J is less running. This is what J is running I squared times, and this is J is running root I times. Both of them are different. Take a note here. J less than equal to I square. This means jth loop is running I square times. And j square is less than equal to I. This means j is running root I times. Can you remember this? Take a note. All of you. Continue. All of you noted it? Yes, sir. Okay, now how many times the jth loop will be running? Right. For I equal to 0, how many times jth loop will be running? Can you tell me? 0 times, right? Now j equal to, sorry, I equal to 1, how many times the jth loop will be running? I square times. One time. One square times. Yeah. It's 1. That means 1. Okay. I equal to 2, how many times the jth loop will be running? 4 times. 4 times. J is less than I square. How many times? I square times. Similarly for I equal to 3. n minus 1 times. How many times the jth loop will be running? N minus 1 whole square. N minus 1 whole square. So can I say, and for each of the j, for each value of j, k will be running n by 2 times exactly, right? For each value of j, k will be running n by 2 times. Now, how many times I need to count the jth loop is running? Can I say it is running 0 square plus 1 square plus 2 square plus n minus 1 whole square? Can I say this? Yes. And this number of times my kth loop is running. Can I say N this? by 2. Now, what is the formula for this? Does anybody know? 0 square plus 1 square plus 2 square till n minus 1 square. There is a formula for it. This is the total number of operations that we are doing. Okay, now try completing the complexity part. I leave it up to you. This is the total number of operations we do, and inside big O of n, if we put, what will be the time complexity? Try completing this. The retest questions now. हाँ चलो देखते हैं. Okay, tell me who wants to do the retest question? What is it? सर वो लिंक दिया सर आपको. वो ये करो, शेयर करो उसको. लिंक जो दिया है, फिर मुझे लॉगिन करना पड़ेगा. सर वो आपका ऑलरेडी गूगल से लॉगिन हो जाएगा. नहीं मेरा नहीं है, उसके लिए एक्सेस चाहिए. ठीक है सर बिना लॉगिन के हो जाएगा वो साइट. सर एक बार वो सर आपका स्क्रीन एक बार दिखाना.
वो ओपन बोर्ड वाला। ओके दिख नहीं रहा है अभी, ये देखो। नहीं दिख रहा है सर। दिख नहीं रहा है? नहीं स्क्रीन स्टॉप करना पड़ेगा सर। अच्छा रुको, स्टॉप करना पड़ेगा। एक बार सर स्टॉप आप करना। कैसे लॉगिन करके कर दो, हम लोग आसानी से समझ जाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ओपन बोर्ड ओपन। सर अब ओके, रुको, ये लो देखो एक बार। हाँ सर इसका फोटो। ओके हो गया। सर आप कैसे ही लॉगिन कर लो ना, फिर आसानी रहेगी हमको समझने में। अच्छा नहीं, मुझे यहीं पे दिखाने दो, मतलब मेरे को याद नहीं है, तो मुझे एक्चुअली देखना हमको पड़ेगा। कोड तो दिख जाएंगे ना सर। कोड दिख जाएगा सबको? क्यों इब्रार, सबको कोड नहीं दिख रहा है इब्रार का? दिख रहा है नहीं दिख सर, रहा है। आपके उससे थोड़ा सिंपल रहेगा, बार बार कंट्रोल में वो सब रहेगा ना, इसलिए। नहीं ठीक है, हो अरे जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। एक्सेस दे दिया सर आप। मुझे मिल गया। एडजस्ट कर लेंगे। कौन सा, ये वाला, थर्ड वाला? फर्स्ट वाला सर, फर्स्ट से स्टार्ट करना है सर। क्यों तुमने सारा नहीं बनाया क्या? सर थोड़ा हेल्प लेके किया था मैंने, परफेक्ट नहीं किया। क्या यू लिखा आर है? गिवन इंटीजर एंड प्लीज करस्पॉन्डिंग इन। अच्छा ये क्वेश्चन यस सर। शायद Pattern- सिमिलर क्वेश्चन किया है हमने असाइनमेंट्स में। यस यस हमारे इसमें Opposite है हमारे टेस्ट में भी वही था, सिर्फ अपोजिट था इसका। असाइनमेंट में किया है ना, दिया था मैंने असाइनमेंट में शायद ऐसा कुछ करने को। हाँ इसका रिवर्स दिया था आपने बस। इसका हाँ, रिवर्स हाँ। दिया था सर आपने। ओके, कैसे करोगे फिर, कैसे किया है तुमने? वो सबमिशन में दिखा वहाँ पे यार। अच्छा देखो देखो, एक बात मैं दिखाता हूँ, कोड तो मैं बताऊंगा नहीं इसका जब तक, तो मैं बस बताता हूँ लॉजिक क्या है। ओके सर। ओके लेट्स सर सी। हो गया हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व वैसे। सर आपकी तरह से कोड देखना था, कुछ सिंपल भी रहेगा। कोई सिंपल, अच्छा दिखाता हूँ। Easy way. फॉर लूप लगा के सॉल्व करना है। बिल्कुल बिल्कुल, दो फॉर लूप लगा के सॉल्व हाँ, करेंगे। देखो कैसे करते हैं, जस्ट एक बार ये करो, स्टॉप शेयरिंग करो, मैं बताता हूँ। ओके सर। अगर स्टिल सॉल्व नहीं होता तो मैं कोड बताऊंगा, बट मैं एक सिंपल लॉजिक डिस्कस करता सॉल्व हूँ। तो हो चुका है सर, बस आपका सिंपल वे थोड़ा मालूम पड़ जाएगा कोड समझने में, वो बोला। सिंपल नहीं है भाई, एक ही इसका तरीका बस नॉर्मल सा है। हाँ तो वो समझा दो सर उसी कोड को। ठीक है, जस्ट सर लॉजिक समझा दो इसका। हाँ लॉजिक ही मैं बता रहा हूँ। देखो क्या हो रहा है, ऑब्जर्व, n इक्वल टू 5 है लेट सपोज, ठीक है। क्या है, पहले 4 स्पेसेस है राइट, और लास्ट में क्या है, स्टार है फर्स्ट रो में। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, 3 स्पेसेस है 2 स्टार है, समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट 2 स्पेसेस है 3 स्टार है, ऐसा कुछ ना। नेक्स्ट 1 स्पेस है 4 स्टार है। नेक्स्ट ऑल स्टार्स। Now observe here, how many spaces? How many spaces? 4 spaces, 1 star. Next 3 spaces, 2 star. Next 2 spaces, 3 stars. Next 1 space, 4 star. Next all stars. 0 space, 5 stars. So what can I do here? What can I do? Okay, how many rows I have to print? N number of 5 number of rows, 5 number of rows, right? Right, for I in range 5. 5 rows I will be printing. Now for the first row, what I am doing? Can I say that for I equal to, for the 0th row, I am printing n minus I spaces. And after printing this number of spaces, I am printing how much? How much stars are getting printed here? N minus I minus 1. If n value of n is 5, minus 0, minus I, minus 1. 4 stars I am printing. And can I say I am printing I plus 1 number of stars here? For each row, what I have done, for I equal to 0, what I have done, first printed n minus I minus 1 spaces, then I plus 1 stars. Break the question.
For each row, what I will do? First print the number of spaces and then print the number of stars. That's all. Make this formula. For j in range, what? N minus I minus 1. Do what? Print spaces. And after that, for j in range, run another loop. I plus 1. Print star. This is it, nothing else. Is the formula working fine? See here. N minus I minus 1. What's the value? For I equal to 0, 4. And I plus 1, what's the value? 1. And for I equal to 1, what's the value of n minus I minus 1? 5 minus 1 minus 1. Is it 3? And number of stars? 2, correct? I think for all. For I equal to 2, what's the value I will be getting? 5 minus 2 minus 1, 2. Next, I plus 1, 3. I think we are getting exactly everything. Number of stars will be 3 and number of spaces will be this, 2. Use this formula. First, for each row, how many rows I will be printing? For I in range, n number of rows. Run an outer loop for that. And for each row, print n minus I minus 1 spaces. And after that, print I plus 1 stars. That's all. Nothing else to do. Clear is it? क्लियर है सर। क्या कर रहे हैं? पहले स्पेस प्रिंट कर ले रहे हैं हर एक रो का और उसके बाद करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट कर रहे हैं। ईच रो में क्या है? स्पेस को सर हम स्पेस 4 लेंगे क्या? क्या? सॉरी, स्पेस को कैसे प्रिंट करेंगे मतलब? स्पेस, अच्छा ठीक है। एंड से एंड ऐसे इक्वल टू ऐसे भी कर मतलब सकते हो। स्पेस की वैल्यू क्या लेंगे सर? वो प्रिंट और एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब वो 4 उसका जो गैप देगा वो उसके लिए क्या वैल्यू लेंगे? इनटू यूजर इनपुट करके लेंगे या कुछ और? नहीं, उसके एम्प्टी इनपुट यूजर नहीं लेना पड़ेगा। एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऐसे प्रिंट करा दो, काम हो जाएगा। सर वो मैंने प्रिंट एम्प्टी स्ट्रिंग के बाद स्पेस में भी डाला है, इसीलिए यूजर इनपुट स्पेस, अच्छा ठीक है। तो एक काम कर सकते हो, उसी को स्पेस बना सकते हो। एंड जो है एंड इक्वल टू स्पेस कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो? इसको एम्प्टी स्ट्रिंग रख सकते हो पूरा, विदाउट एनी कंटेंट, नो स्पेस इवन। एंड एंड को क्या कर सकते हैं? स्पेस रख सकते हैं। ओके, ऐसे रखा है सर लास्ट लाइन को, लास्ट लाइन ऐसे रखा है जो ठीक है। हाँ, रखना पड़ेगा। सर मैं बोल रहा हूँ जो हम लोग स्टार्टिंग में 4 का स्पेस देंगे, सेकंड लाइन में 3 का, उसके बाद 2 का, वो कैसे डिफाइन करेंगे वो समझ नहीं आया। n माइनस आई माइनस 1 ये फॉर्मूला बन रहा है। ओके, उसी से वो पूरा डिफाइन हो जाएगा। डिफाइन हो जाएगा। ओके सर। ओके, अच्छा और कोई क्वेश्चन? और कौन सा क्वेश्चन है सर? सबसे इम्पोर्टेंट वो थर्ड वाला क्वेश्चन है। दिखाओ उसको क्वेश्चन थोड़ा दिखाओ। बता दीजिए। मैं शेयर करूँ स्क्रीन? हाँ करो। सर सेकंड से ही बता दो ना, सेकंड थर्ड फोर्थ पे लाइन से हो जाएगा। चलो, अब टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। वैसे आज कुछ आप स्पेशल दिखाने वाले थे, वो दिखा नहीं पाया, डाउट्स लेते लेते ही चला गया। ओके चलो दिखाएंगे। तो क्या था वो तो बता दो। पैकेजेस बनाते कैसे हैं पाइथन में, पैकेजेस। और तुम्हारे थोड़ा बहुत वो बता देते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर बता देते हैं आज। स्क्रीन विजिबल हो रहा है? हाँ हो रहा है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है। क्या है? यू आर गिवन स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस, अपर केस, इंग्लिश। रिप्लेस ऑल कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग विथ दिस एक्सेप्ट द लास्ट 5 कैरेक्टर्स। इसमें ऐसा क्या है? कल ही देखा था मैंने। इसमें ऐसा क्या है? पहले 5 को रिप्लेस करना, नहीं लास्ट के 5 छोड़ के बाकी सब। अच्छा मुझे ये दो,
रिक्वेस्ट रिमोट कंट्रोल दो। पहले 5 में डॉलर्स को चेंज करना है ना? पहले नहीं, लास्ट फाइव कैरेक्टर्स को छोड़ के बाकी सबको डॉलर बना देना है। दैट्स ऑल। ओके ओके। दिस इज सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो सही से, पहले पूरा आंसर मिल जाएगा। देखो लास्ट 5 यहाँ पे है, लास्ट 5 BCDEF, इन लास्ट 5 को छोड़ के ऑल आर कन्वर्टेड टू डॉलर्स। दैट्स ऑल, कुछ नहीं है इस प्रॉब्लम में। सर या मैंने इसको ट्राई किया रहा था ना, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं बताऊँ आपको। बोलो क्या हुआ। हाँ एक मैंने लिखा था str इज इक्वल्स टू इनपुट फिर ब्रैकेट क्लोज। ओके फिर नीचे लिख दिया था प्रिंट इनटू ब्रैकेट str डॉट रिप्लेस, फिर से ब्रैकेट str इनटू लाइक स्क्वायर ब्रैकेट 0 कोटेशन -5 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। ओके फिर कॉमा, फिर कोटेशंस छोटे वाले, फिर $6 टाइम डाल दिया, फिर उसके बाद फिर से कॉमा डाल के उसको 6 लिख दिया और क्लोज ब्रैकेट 2 बार। पर 6 क्यों लिखा? अच्छा 6 लिखना जरूरी नहीं था यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन तो वैरिड लेंथ का है। पुनीत भाई जो बता रहे हो ना, तो ठीक है, वो कोड हमने भी गूगल करके एक बार सर का सुन लो, एक बार सर का सुन लो, सर बताएंगे क्या है चीज, वो समझ में नहीं आ रहा है कैसे रिप्लेस हुआ। ठीक है, इधर देखो, सब देखो कैसे करेंगे इसे। स्ट्रिंग s, ओके, इनपुट, ये कर सकते हो, सब इनपुट ले लिया। फॉर I इन रेंज, क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं लेन ऑफ s -5, बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? व्हाट टू डू, s ऑफ I तो क्या करेंगे, इससे रिप्लेस कर सकता हूं डॉलर। इसके बाद देखते हैं, चलो ये देखते हैं ये करेक्ट है या नहीं। प्रिंट s, देखते हैं ये करेक्ट है या नहीं। So what had happened? Okay, your output. Okay, चलो कोई रन टाइम एरर आ रहा है। str does not support item assignment. Okay, fine. लिस्ट दिया सर वो क्या? ऐसा Okay, where the error is coming? Let me see once. तो बोले लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट दिया पास आपने जो s ऑफ I, या इसमें नहीं है, स्ट्रिंग्स में ये पॉसिबल नहीं है, यही बात है। What if we change it to list? पहले उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर कन्वर्ट करके फिर वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। L dot append, let's see, ये हो सकता है। C++ हुआ होता तो आराम से ये क्वेश्चन हो गया होता। पाइथन को उतना इजी लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? पाइथन सीखने में बहुत आसान है। देखो C++ में अभी इसके लिए 10-15 लाइन लगता है, पाइथन में 5-6 लाइन में हो जा रहा है। Let's see whether I am getting anything correct or any error. Okay, yeah, fine. No error is there. That means list can be made. Fine. What's my s? It's getting printed. $, mention. Okay, fine. ठीक है। Answer is equal to, let's declare an empty string first. Okay. Now for I in range, length of, sorry, पूरा length of string होगा, गलत किया है। Length of s, sorry, length of L -5. Just simply concatenate.
Answer is equal to answer plus L of I. Okay, yeah, it will be dollar. Yeah. Fine. Next, do what? Print. No, not print. It's only for run again one loop for I in range. The starting will be length of L minus 5. Okay, ending will be length of L only, and then okay, yeah, no need of this. Answer is equal to answer plus L of I. Now let's try printing this, whether it's happening or not. Okay, it's passing. Try submitting. Okay, all done. Correct. What I did, declare a list, and inside whatever is the content of the list, store it inside the whatever is the content inside the string for each value, for each of its index, store it inside L. Okay, that I can do. Declare an empty string now for the first length of L minus 5, except the last 5 elements of the list. Do what? Append inside my, concatenate the present string answer I have with this $sign. And for the last length L minus 5 till the last character of my string, whatever is it, keep it as it is, and that will be stored where? Inside my list of 5. Concatenate those contents inside my answer string, and at the end print answer. No need to go complex, just run the loops and you will get your answer. कोड दे सकते हैं, अच्छा शेयर कर देना अगर तुम्हारा कोई ग्रुप है तो। सर क्वेश्चन नंबर 2 का भी बता दो फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दिखाना। तो सर इसीलिए मैंने रिप्लेस यूज करा था ना, तो उसने आंसर तो सही बता दिया, पर बाद में जब मैंने सबमिट करा ना तो उसने रॉन्ग कोड बताया। क्योंकि तुम 6 को फिक्स कर रहे हो ना, 6 किसी पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए दे रहे हो। आंसर तो जनरलाइज्ड है, कितने भी लेंथ का स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी स्ट्रिंग हो सकता है। यही बात है, यही बात है। Idempotent numbers, what is it? You are given print the sum of all independent numbers greater than or equal to 1 but less than equal to n. अरे ये तो आसान सा क्वेश्चन है यार, इसमें और क्या बताऊं। 3 और 5 से डिविजिबल है बट 15 से नहीं, दैट्स ऑल। सर वो इंडिपेंडेंट नंबर होता क्या है? वो इंडेम्पोर्टेंट नंबर वो है प्रिंट द सम ऑफ ऑल 1 to n के अंदर कितना इंडेम्पोर्टेंट नंबर से सारे का सम निकालना है इस क्वेश्चन में। इंडेम्पोर्टेंट नंबर वो है जो आइदर 3 से डिविजिबल होगा या तो 5 से डिविजिबल होगा, बट दोनों बोथ 3 and 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ये क्वेश्चन है, आइदर 3 से या तो 5 से, किसी एक से डिविजिबल होगा। सर सबमिशन में जाके हमको इवैल्यूएट कर लीजिए हमारा सही है कि नहीं। कहाँ पर है? सबमिशन कीजिए सर, रिजल्ट्स पहले तो रॉन्ग हो गया था, दोबारा से ट्राई किया। सही तो है। सही है, सही है, सही है। और सर ये मतलब जो 15 से नॉट इक्वल टू रहना है कि 15 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना और चाहिए, होना चाहिए तो 3 और 5 में से किसी एक से एग्जैक्टली दोनों में से एक से होना चाहिए, एंड नहीं चलेगा वहां। और ये जो कर रहे हो ना हेल्प लेके और गूगल लेके करना, ये अगर कोई इंटरव्यू पूछ दिया तो तुम फंस जाओगे वहीं पे।
वो क्लियर इसीलिए सर दिखता आपसे है। डिस्कस कर रहे हैं अभी। वो जो आपने जो अभी कोड लिखा था इसके लिए, किसके लिए? डॉलर वाले के लिए। तो नॉर्मल और लूप से बन जाएगा, लूप तो आता है ना, और उसको और यूज करो। और आज के टेस्ट में इन लोगों ने जो लिखा वो बहुत डिफरेंट है। मुझे भी नहीं आता वो सब उतना ज्यादा। उसमें सर अभी लास्ट क्वेश्चन 4 कर देते फिर क्लोज कर देते हैं मीटिंग। सर एक अच्छा बार रुको रुको एक रुको, एक बार पहले एक बार अटेंडेंस एक बार बनाने सब दो। एक बार सबमिशन देखना, सारे सबमिशन देखना। सर मैं तो अटेंडेंस क्लास ऑन के बाद ही लगा पाऊंगा, फोन से लगानी पड़ेगी थर्ड क्योंकि वाला मेरा जो नेट आपने बंद हो सॉल्व है। किए ना, क्या? उसका सबमिशन देखिए। थर्ड वाला जो आप सॉल्व किए ना, हम जो सबमिट किए उसको देखिए। तुम डायरेक्ट कैसा है? डायरेक्ट सॉल्व कर दिए हो सब। मैंने सॉल्व नहीं किया भाई, मैं तो ओपन बता रहा हूँ, वो मैं किसी से हेल्प उसमें नहीं नहीं ठीक है भाई भाई दो देखो, रेंज दिया है। अभी अभी स्टार्टिंग है, अभी स्टार्टिंग है। तो जब जब धीरे धीरे जब कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, तो तुम्हारी खुद की इच्छा होगी कि भाई मैं खुद से कोड लिखूं। हाँ करो भाई, आप बिल्कुल सही है। खुद से ही ट्राई करो, ये जो कर रहे हो ये आदत बहुत बुरी है। सर वो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का कोड देखो एक बार, ऐसा जो उसने सबमिट किया है। Okay, your attendance I have created. सर वो मैं तो क्लास एंड होने के बाद लगाऊंगा अटेंडेंस, क्योंकि मैं अभी एंड करूंगा तो फोन से जूम एंड करके जाना पड़ेगा। Okay, fine. You are given two integers a and b. First b, print first b multiples of a. Okay, b multiples, two number is given, 2 is given, its first 3 multiples you have to print. Okay, next 3 is given, its first 4 multiples you have to give. That means या सही है, जो भी किया है सही किया। सर ये लेकिन मैं खुद से किया था। सही है। a into I, how many times? b times you have to print the multiple of a. That's all, nothing else. क्वेश्चन इज इजी, बहुत इजी क्वेश्चन आया था। सर वो ए और बी को अलग से इनपुट ले सकते हैं क्या? एक मिनट, दोनों को अलग से इनपुट लेना पड़ेगा। सर मैंने लिया था a कॉमा b इक्वल टू लिस्ट मैप इंटीजर इनपुट स्ट्रिप स्प्लिट। ठीक है, फिर उसके बाद फिर सेम कोड है लाइन नंबर 3 एंड 4। रन कर गया ना? यस सर। इतना तुम डॉट स्प्लिट वगैरह लगा के क्यों लेते हो, वो मेरा क्वेश्चन है। ओके या फाइन है। What's the question of this answer? स्ट्रिप से दोनों साइड का गैप देने के लिए और स्प्लिट से दोनों में बीच में गैप। भाई ठीक है, बात सही है तुम्हारी। बिगनिंग में अगर तुम डॉट स्प्लिट वगैरह यूज करोगे ना, So, what's the question of this answer? थोड़ा सा यार ऐसे न्यू लगा, थोड़ा सीख लेते हैं इसीलिए ट्राई। Two integers are there, a and b. First b multiples of a has to be printed. That's the question. थैंक यू सर। आप अटेंडेंस क्लोज मत करना, मैं ऑफलाइन जा रहा था, अटेंडेंस लगा दी। ठीक है, ऑल ऑफ यू। सर एक क्वेश्चन था मेरा। बोलो। जैसे ये अभी हैकर रैंक पे टेस्ट चल रहा है, हैकर रैंक के टेस्ट में एक क्वेश्चन है अभी जो अपन ने डॉलर वाला सॉल्व किया। डॉलर वाला सॉल्व में आपने कितना 2 फॉर लूप लगा के सॉल्व किया, और एक इन्होंने जो सॉल्व किया है वो आई थिंक डॉट आर जस्ट लेंथ ऑफ एस करके सॉल्व किया है सिंगल लाइन में। हाँ। अगर सपोज आप मेरा इंटरव्यू लेते हो या वाइवा लेते हो, और उसमें डॉट जस्ट वाला जो एग्जांपल है उससे अगर मैं सॉल्व किया हूँ, तो आप मुझे किस लेवल के क्वेश्चंस पूछोगे? मेरे को नहीं मालूम। अरे सर सिंपल क्वेश्चन है ना। मैं तो आपको ज्यादा खींचूंगा कि आपको कॉम्प्लेक्स चीज भी आता है, तो आपने कर पहले मैं आपसे पूछूंगा कि ये तो आपने किया क्या, एक्सप्लेन करो। और फॉर लूप अगर लगा के मैं 4 फॉर लूप लगा के अगर वो बनाया हूँ, तो आप कैसे क्वेश्चंस पूछोगे? मैं जी पूछूंगा ये पर्टिकुलर फॉर लूप कर क्या रहा है। कानू भैया हेलो हेलो। हाँ समझ में आया सर का आंसर? हाँ 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 आ गया। बस यही चीज समझाना चाह रहा हूँ
कि आपका जो कोड है ना उसका इम्प्रेशन सामने वाले पे पड़ेगा और उस तरीके के वो क्वेश्चन पूछेगा। तो जो स्टार्टिंग में जो हम कोड लिख रहे हैं ना वो बहुत सिंपल होने चाहिए। सामने वाले को ये हमने ब्रो लगना जो चाहिए, लिखा था ना 3 लूप वाला, वो 2 लूप में लिखा है हम लोगों ने वो कोड। हाँ, सामने वाले को ये लगना चाहिए कि अभी हम बिगिनर है, ओके तो वो क्वेश्चन उस तरीके के पूछेंगे। ओके गॉट इट। Okay, fine. We'll meet tomorrow. Okay. Yes, Sir, sir. Attendance mark. Thank you, sir. Thanks a Okay, lot. sir. Sir, Thank you. I have some problem. Yeah, My tell me. GitHub username changing. I What have are- changed my GitHub username, but it is still showing AU25. Who has changed? Sir, Who has changed the GitHub username? who was? What had happened to the GitHub? Sir, he got the badge transfer, na. That's why he changed it from AU25 to AU26. I'm getting some issues, so that's why I'm asking for. So Mega maybe- ma'am called me. Then what he told? Sir, how to change my GitHub username or Anything, Amar? Can you help? I think you got the batch transfer also, right? portal username? Yes, sir. What he needs I to have do? received a video also how to change my username. Then Okay. I have tried that. I'm changed that, but it's still showing the A26. Okay, then need to see means what's happening. Sir, I am sharing my screen. If you see. Who is the technical mentor who handles these things? The username changing and all. सर वो भी स्क्रीन शेयर में मालूम पड़ जाएगा भाई का प्रॉब्लम क्या है। करो शेयर करो। हमसे स्क्रीन शेयर करो भाई। हाँ हमसे स्क्रीन शेयर करो, हम देख लें। कानू ब्रो आईफोन वाले। वामशी ब्रो न्यू टैब लेके कर दो जल्दी से गिटहब। देख लो सर। ऐसे चेंज कैसे कर रहे हो दिखाना। हाँ सर, ये तो चेंज कर दिया गिटहब का, ये इधर भी चेंज करने की नहीं आ रहा है। अरे ब्रो वो तुमको कॉल जो इनविटेशन लिंक आया होगा ना उससे हुआ होगा। आप पहले डिलीट करो जो आपने बनाया है ना, ये रॉन्ग है। न्यू आईडी चेंज करो और इनविटेशन लिंक को ऐड करो बस। क्या भाई? तुम्हारा एटेन्यू वाला पोर्टल दिखाओ, उसमें डैशबोर्ड में चेंज किए हो कि नहीं। तुम चेंज करोगे तब वो लोग तुमको लिंक भेजेंगे। डैशबोर्ड जाओ, डैशबोर्ड की सेटिंग में जाओ। हाँ यहाँ पे 25 ही है, यहाँ पे देखो 25 ही है गिटहब। चेंज करना है AU25 वो लिंक डालना था आपको ब्रो वहाँ पे। गिटहब वामसी आई गेस। वहाँ से नहीं, प्रोफाइल। यस, प्रोफाइल के अंदर आपका लिंक एडिट करना है आपको, उधर से कॉपी करके उसका फिर वो करना है नीचे आके मॉडिफाई, और नीचे आके हाँ वहाँ पे मॉडिफाई लिखा है ना, लास्ट में मॉडिफाई लिखा है, लास्ट में जाओ। हाँ यहाँ पे तुम्हारा गिटहब वाला लिंक कॉपी पेस्ट कर दो। न्यू लिंक जो 26 में बनाया ना वो लिंक पेस्ट करो, फिर मेगा मैडम को कॉल करो, वो तुमको इनविटेशन दे देंगे, उसके साथ मर्ज कर लेना। तो ये अपडेट करना पड़ेगा ना गिटहब में। उसने यूजर नेम चेंज करना है गिटहब का AU26 और इनविटेशन लिंक ही विल गेट फ्रॉम द Attenu, he will get clone them. Mega ma'am also don't know this solution, so that's why. Who is the technical mentor who handles these things? Call to Amisha, she will help you out. जो 6 बजे का TA सेशन होता है उसमें हाँ, the TA session at 6 PM, ask these things that time. I think you will get it.
Otherwise, Vamshi, tomorrow afternoon call me. I will tell you. tomorrow. हाँ भाई अमर भाई 12 ठीक है 3-4 भाई, बजे अभी तक तो उठ ये जाते हो ना? हमको चेंज करना ये आता है, नहीं आता है वो उमर भाई। वो हो जाएगा ब्रो, कल कर देंगे आफ्टरनून में, सब हो जाएगा। अभी आपने जो यूजर नेम चेंज किया है ना AU26, उसका URL जा करके कॉपी करो, आप जो प्रोफाइल दिखाया वहां पे सबमिट करो, फिर कॉल करो मेका को, मैम को, हो जाएगा। इधर 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 का भी करना है। जो AU26 आपने यूजर नेम चेंज किया है ना गिटहब का, उसका लिंक आप कॉपी करके चेंज करने के बाद उधर कॉपी पेस्ट करो प्रोफाइल पे, लिंक पे जाके। इधर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा ब्रो, कौन किधर? सी తర్వాత లింక్ డెస్క్టాప్ షేర్ చేయి लिंक पाड़े मचा, డెస్క్టాప్ షేర్ చేయి ఏం చేస్తానురా? గిటాప్ విండో जूम कोई क्लोन कर रहा है भाई? हाँ इधर इधर तो अभी अभी क्लिक कॉपी करना है क्या? उसका ब्रो इधर ये का। AU26 आ रहा है ना आपका, आपने वंशी AU123 क्यों बनाया? उसको डिलीट करो ना, अंदर का AU123 को। ओनली AU26 तक आपको लिंक देना है, इसको डिलीट कर दो ब्रो। हाँ, ये राइट कैसे क्लिक डिलीट से होता है डिलीट नहीं भाई? होगा ब्रो वो। छोड़ो उसको, चिंतन वामशी AU26 पे क्लिक करो। वहां पे क्लिक ये करो कॉपी करना है। हाँ अरे क्लिक तो इधर करो। इधर से उधर तक, इधर तक। हाँ हाँ, ये AU26 तक कॉपी करके दे दो, और जो आगे 1 2 3 4 2 का 1 लिखा है ना, वो वाला डिलीट कर देना। ओके बस होता है। यस ब्रो। एटेन्यू में जाओ उसको पेस्ट करो Okay, now follow the guidelines as guided by Kanu sir. Control C कर लो bro. चलो बाय बाय। ओके Okay, तो now बस raise होता the है ticket and ask them to give your invitation link in the ticket, and tomorrow you will get a call. Otherwise, you call them. You will get that. ओके फाइन टिकट रेज करके बोल दो तुमने इनविटेशन लिंक भेज, मांग लो उनसे, गिटहब आईडी चेंज किया करके न्यू बैच ट्रांसफर डाल दो पूरा। नहीं भाई, अभी बैच खत्म होने को आ गया, तुम अभी को याद आया तुमको? हाँ ओके फाइन गुड नाइट ऑल ऑफ यू गुड नाइट सर, स्वीट ड्रीम, बाय एवरीवन।